So I'm going to bust such 5 myths that are there, such 5 misconceptions, 5 lies that you tell yourselves after the CAT exam every year. Hello everyone, welcome back to my channel All Sorted, and this video is about what happens after the CAT exam. People make mistakes every year after year, and I have also made the same mistakes. So please watch this video if you don't want to make such mistake, don't want to regret later, because बहुत लोगों का CAT खराब गया होगा and they are thinking that my life is screwed and they don't see any options open. So this video is going to be an eye opener for most of you. Please do not avoid this, otherwise you can make a huge mistake. So CAT 2021 is over, and tell me in the comments how did the exam go. Even if it did not go well, then especially this video is for you. Typically what happens after every year after the exam, these 5 things will come to your mind, because सबका CAT अच्छा नहीं जाता है, majority of the population का, okay, कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है. So these 5 points, remember, I'm going to tell you, and also I'll tell you the solutions out of it. So please watch till the end so that you do not miss anything. Reaction number 1: my life is screwed, my exam did not go well, I screwed the DILR section. यार मेरा वो मार्किंग्स गलत हो गया, मैंने ठीक से मार्क किया कि नहीं, मैं तुक्के मार के आ गया. Basically my CAT exam was screwed. Now I am in the dilemma कि यार क्या करूँ, राइट. MBA करना था तो बस सुना था कि CAT एग्ज़ाम ही सब कुछ है, you know, and MBA was synonymous to CAT exam for all of us. So we feel dejected, we feel so down, we feel so bogged down, we feel disappointed. Now the reality check. So the reality check is CAT is not equal to MBA. Okay, that's a good news. CAT is just one of the exam that is a gateway to various IIMs, which are considered the top B schools of the country. Okay, but MBA is not equal to CAT. There are various other exams lined up coming your way, and if you take this disappointment towards other exams, if you don't get detached from this exam, however it was, अच्छा गया, बुरा गया, जो भी गया, खराब गया, but if you carry forward this attitude in other exams, it will spill over and it will have devastating effects in another exam. Various entrance exams lined up, like XAT is there, like NMAT, like SNAP, TISNET is there, IFT is coming, CET will be there. So these are some of the few exams that I remember. Okay, 3-4 साल हो गए अभी देके, but these are 5-6 exams. बस अगर बुरा गया एग्जाम तो 1-2 दिन ठीक है, 1-2 दिन थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट में हो. अगर अच्छा गया एग्जाम तो 1-2 दिन खुश हो. बस 2 दिन के बाद, जस्ट आज और कल, उसके बाद आपको पूरा नेक्स्ट एग्जाम के लिए भिड़ जाना है. एंड जस्ट फॉरगेट अबाउट CAT कि CAT जैसा एग्जाम कोई था भी, हो गया सो हो गया. जस्ट कीप इट असाइड, गेट डिटैच फ्रॉम CAT. ओके, दैट इज पास नाउ. फोकस ऑन द अपकमिंग एग्जाम्स एंड बिल्ड अ पोर्टफोलियो ऑफ डूइंग वेल इन डिफरेंट एग्जाम्स. बाद में जाके सिलेक्शन कहीं ना कहीं बेस्ट स्कूल में होगा. रिएक्शन नंबर 2: यार मेरा CAT एग्जाम ठीक से नहीं गया एंड IIMs आर द ओनली टॉप B schools ऑफ द कंट्री. अब मैं क्या करूँ, आई हैव टू रिपीट, और मैं करूँ भी तो क्या, एंड आई एम स्क्रूड. सो reality check. So take the list of top 30 B schools of the country, top 30 B schools. Google search karo. Don't rely on one single search. Go to Google search of 1 to 20 pages. Check out that list. I'll bet on this, less than 50% of the colleges in the top 30 institutes will be IIMs. There are other institutes better than the IIMs. There are other institutes that are in niche domains, niche in marketing, niche in HR, niche in operations that you were not aware of, because coaching class ने कुछ बताया नहीं इसके बारे में, because your parents were not aware obviously of these, because we see very less students talking about this, and IIM का hype इतना हो जाता है like IIT के उसके सिवा कुछ दिखता ही नहीं है. Now this is the time you need to research. अभी तक अगर नहीं किया है, it's okay, well and good. किया है तो good, नहीं किया है तो check the top 30 list of colleges, top 30 B schools.
और टॉप 20 भी ले लो, चलो ठीक है, गो रिसर्च ऑन दैट एंड फाइंड आउट ये कॉलेज कौन से एग्जाम के थ्रू मैं जाने वाला हूँ, एंड ये एग्जाम अभी मेरा आने वाला है. सो यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ कॉलेजेस लाइक टिस, like IFT, like NEET, like IITs, IIT Delhi, Bombay, Kharagpur, SIBM Pune, SCM HRD in the top 20, top 25 list, and you'll feel good कि यार ये सब बाकी है. Almost 50-60% of the colleges top 30 list के मेरे अभी बाकी है देना एग्जाम. So why do I need to feel worried कि बस एक कैट एग्जाम मेरा खराब गया है? Just get rid of it, focus on the upcoming exams. Reaction number 3 that comes typically after CAT exam कि I'm going to repeat next year, that's it. मेरा इस बार कुछ तो हो गया, गलती हो गया, बट नेक्स्ट ईयर मैं रिपीट करने वाला हूँ. सो फॉर गाइज लाइक यू, okay, if you are a fresher, if you just have a 1 year work experience or no work experience, yes, you can go for another attempt. If you are someone with 2 years of experience, 3 years of work experience, cannot afford to take another attempt, my high suggestions, or even for the ones who do good in this CAT as well, there are various colleges apart from the IIMs, okay. और ऑल्सो जिसका एग्ज़ाम अच्छा गया है वो लोग हवा में ना रहे कि एग्ज़ाम अच्छा गया है तो IIM तो पक्का है, क्योंकि 10 में से एक बंदे का सिलेक्शन होगा. I'll talk about this in the next point. I will repeat next year, don't be very rigid on this statement. Okay, wait, क्योंकि MBE का गेम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है भाई, बस CAT एक एग्ज़ाम गया है. Okay, 5-6 एग्जाम जो मेन अभी और बाकी है. Decide after taking those several exams that should you want to go for another attempt. That's your choice. But especially for people who cannot afford another attempt or already having high work experience, I would highly suggest concentrate on the upcoming exams and just forget about what happened with the CAT, whether it went well, whether it went bad. Whatever is the thing, just get rid of this CAT now. Point number 4, मेरा CAT went well यार, I am on cloud 9. मेरे आंसर शीट मैच हो रहा है, DLR कट ऑफ भी निकल जाएगा. मैं आई एम चेकिंग द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आंसर की, इट इज़ मैचिंग. आई एम पुटिंग माई PDFs, ये मेरा सही हुआ है. सो एक्सपेक्टेड परसेंटाइल, एक्सपेक्टेड कॉलेज, एंड वहाँ पे दिख रहा है कि IIM मिल सकता है. सो हो भाई, स्वाद आ गया, मज़ा आ गया ज़िंदगी का. अभी तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. बाकी सब तो यार लूजर्स है जो बाकी सब एग्जाम दे रहे हैं. मैं तो भाई हीरो हूँ, मैं तो बस IIM के लिए बनाऊँ, बाकी सब नहीं करूँगा. ये ऐसे बंदे मुंह पे गिरते हैं एवरी ईयर. ओके, दोज पीपल हु जस्ट टेक वन एग्जाम एंड दे आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट एंड क्लियर दैट एग्जाम. बहुत ही 1-2% होते हैं ऐसे लोग जो बस एक एग्जाम लिखते हैं और उस पर डिपेंडेंसी डालते हैं. आई ऑलवेज से बिल्ड अ पोर्टफोलियो, पुट योर एग्स इन डिफरेंट बास्केट्स, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. सो डोंट टेक दैट रिस्क ऑफ जस्ट डिपेंडिंग ऑन वन एग्जाम, बिकॉज आगे जाके वैट होगा, PI होगा, देर इज अ एलिमिनेशन राउंड वे योर 10th 12th ग्रेजुएशन वो स्कोर्स भी मैटर करेगा, ब्ला ब्ला ब्ला, वेरियस रीजन्स. People with even 98-99 percentile do not convert good colleges, do not convert a single IIM. आप देख सकते हो LinkedIn पे जाके. So that time don't get disappointed कि यार मैं ज़्यादा हवा में उड़ गया, मैंने बाकी एग्जाम से फोकस करना चाहिए था. This myth, please get rid of this. Understand what is the upcoming process. Even आपका अच्छा गया है, so there is VAT, written ability test, there is personal interviews. You should have group discussion skills. You should be now focusing on current affairs. अभी तक newspapers नहीं पढ़ा है तो religiously go to newspapers. Download some apps like FinShots, Economic Times. रोज पढ़ा करो. FinShots and Economic Times I highly recommend. Also, if there are any current affairs GK apps, download that. Search for current affairs 2021 GK app on Play Store. Now is the time to get into that zone of building your knowledge, getting that zone of doing well in the process after the exam, because exam was just one filtration. अभी भी आपका success guaranteed नहीं है. So kindly focus on other aspects, because different exams like IFTs, HAT tests will have the GK portion. Now is the time कि आप भिड़ सकते हो उस पर. Dedicate 2 hours every day to the GK section. The skills of how to do well in the personal interviews, the articulation skills you need to learn about that also. Keep on watching such videos on YouTube or whatever interview experiences of past IIM students, interview experiences of different colleges. Search that on Google. I'm not going to spoon feed you everything. I'm just giving you some points. And also, do not miss on filling the forms. Point number 6 is the bonus tip.
Now is the time. You should not forget about filling the different forms. Various colleges will have separate forms, like NEET का अगर आपको CAT के थ्रू चाहिए तो अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा, IITs का अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा. डेट्स जाने के बाद no one will entertain. Now is the time. You do not be isolated. Get in touch with people, your coaching class or Facebook groups where they discuss पागल गाय ग्रुप्स की डेडलाइंस क्या है. कीप अ वॉच ऑन इट कि फॉर्म्स कब निकलने वाला है. FMS का फॉर्म जैसे आ गया था, MDI गुड़गांव, CAT के थ्रू ओनली IIMs में आपको फॉर्म डिफरेंट नहीं भरना पड़ता. रेस्ट मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस लाइक 70-80% यू हैव टू फिल देयर सेपरेट फॉर्म्स, राइट देयर डिफरेंट एग्जाम्स. सो प्लीज कीप अ वॉच ऑन डिफरेंट फॉर्म्स दैट गेट रिलीज्ड to apply for such colleges. This was an urgent and important video, so I kind of made this and I hope there are good takeaways. Please share this video with your friends and on your WhatsApp groups. This will likely help a lot of people. Otherwise you're going to make that same mistake and regret later. अगर even आपका एग्जाम अच्छा गया है, आप हवा में मत उड़ो. even आपका एग्जाम बुरा गया है, no need to worry at all. CAT was just one exam. There are different exams lined up and MBA was your real goal. MBA करना था भाई, ठीक है. MBA के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अभी भी ओपन है. जस्ट फोकस ऑन दैट एंड विद दैट पॉजिटिव एटीट्यूड, फोकस ऑन योर हेल्थ, फोकस ऑन योर स्लीप. देयर शुड बी नो बैगेज ऑफ CAT exam that should fall on different exams. So that was the whole point of this video. I hope I conveyed those points, and if it reached you, please like this video. Please subscribe to my channel for more such informative videos that will be upcoming on this channel. If you don't want to miss it, hit on all notifications. Bye bye guys, I'll see you next time. Till then, stay all sorted. Bye bye.